Giving you a set of words. Number 1, बातों. Number 1, बातों. बातों means, किसी को पता है बातों means? Sir, what do you have to do? Meaning of bato. Make 3 columns: French, English, and sentence. Like an example, I will be giving a few important words today. The first word is bato. Bato means boat. Bato means boat. Now let us try a sentence with bato. With the limited amount of words that you have read, please try to make a sentence without using any help of internet with the words that you have learned so far. एक sentence बनाओ with the word bato. For example, you can always say there is a boat. So there is a boat को कैसा लिखोगे? There is a boat. Suppose there is a boat लिखना. There is a boat in the sea. Yeah, on the sea. There is a boat on the sea. So there is a boat on the sea लिख सकते हो. Ilia. Ilia मतलब there is. Ilia. बातो. इलिया बातो. ऑन द सी अगर लिखना है तो सुर लामेर. इलिया बातो सुर लामेर is an easy sentence. Like there is a boat on the sea. Please copy this. Number 2, agréable. ई के ऊपर एक्सेंट होगा. agréable, ई के ऊपर एक्सेंट होगा. एगो. It means something which is pleasant, something which is agreeable. Agréable. So example can be जैसे अगर लिखना है that he is pleasant, मतलब he is pleasant to talk to. He is pleasant. तो he मतलब il, he is, il a. He is very pleasant, il a, très agréable. अगर किसी को describe करना है, a friend or something, and you want to say the friend is very pleasant to talk to, then il est très agréable. Is this clear? Please copy this and see if it is clear, then tell me. Are everyone clear? Dharya? Boire. We have done this word before, but boire is important word. It means to drink. Boire means to drink. जैसे अगर मुझे लिखना है कि I love to drink milk. I love to drink milk. तो j'aime means I love. J'aime. I love to drink. So j'aime, then to drink. J'aime boire. और du lait. I love to drink milk. So ले के पहले du आता है. I love to drink du lait.
J'aime boire du lait. Number 3, boire, to drink. J'aime boire du lait. I love to drink milk. Number 4, bien, which means good or well. Well as in good, not kuwa wala well, nahi. Well means like good, something nice. For example, I can write well, so je peux écrire bien. It means I can write well. Je peux écrire bien. Number 5, canapé. Canapé means sofa. It is a male word, okay? It is not a female word, it is a male word. Suppose if you have to make a sentence, a very simple sentence, based on what you have learned, say you can say there is a sofa, like il y a un canapé at my house. At my house का ऐसे तो आलम है जो हो सकता है, but best way at my house लिखने के लिए जो best word है वो है chez moi. Chez moi का मतलब होता है at my place. Chez moi, CHEZ. So il y a un canapé chez moi means there is a sofa at my place. Okay, il y a un canapé chez moi is there is a sofa at my place. Word number 6, carte bancaire. CARTE BANCAIRE. Carte bancaire means your credit card or debit card, means bank card basically. It means card of bank. Card, credit or debit card. So carte bancaire means the card with which you pay. So a sentence can be, suppose if you want to say I would like to pay, I would like to को हमेशा लिखोगे je voudrais. I would like to pay. Je voudrais payer. Je voudrais payer means I would like to pay. तुमको लिखना I would like to pay by card. So je voudrais payer एक सेकंड रुको. Je voudrais payer ला होगा ला carte bancaire. I would like to pay using the, इसका मतलब I would like to pay using the card. या फिर यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो, je voudrais payer, पा भी कर सकते हो, PAR. बाय अगर लिखना है तो par carte bancaire, which means through or by. par for के लिए भी यूज होता है, by के लिए भी यूज होता है. carte bancaire. यहाँ तक कॉपी करके टेल मी. So word number 7 is célibataire. Célibataire we have already done earlier. So célibataire we had done présentez-vous. It means single or unmarried. Single or unmarried. This is célibataire. So an easy sentence can be je suis célibataire, which means I am unmarried. And if you have to ask anybody that are you unmarried, आप क्या unmarried हो? So you can say if the person is a friend,
The difference is that this is a question. So, je suis célibataire. This is tu es célibataire. So you will ask as if you're asking. You will ask in an interrogative fashion. Not tu es célibataire, but tu es célibataire. Are you single? Word number 8 is chaise. Chaise means chair. Chaise also we have done earlier, I think. Chaise means chair. So a sentence can be, suppose, if you have to say, I bought a chair yesterday. I bought, past tense. तो ये लिखोगे और bought का या purchased का होता है आशिते. ये पास कॉम्पोज है परचेस का. तो ये आशिते मीन्स आई परचेस. और ये आशिते, suppose if you have purchased 2 chairs, तो ये आशिते the chaise means 2 chairs. तो यहाँ s लग जाएगा. Yesterday, which is year. I purchased 2 chairs yesterday. Okay, I purchased 2 chairs yesterday. Je acheté the chaise here. And if you want to purchase 1 chair, then it will be une chaise. Okay, 1 chair will be une chaise. Chaise is ending with e, and this is a female or a feminine word. So une chaise. A few other words. Number 9. Like Claire. ये भी हम लोग किए थे recently. It means clear. Suppose if you want to ask somebody and say Claire, which means is it clear? So Claire matlab clear. Another sentence can be जो हम लोग ऐसे में किए थे, the sky is clear, the CLA clear, which means the sky is clear. So clear means clear. The next 2 words are chapeau. Chapeau means hat, and chemise means shirt. So you can say, for example, if you have to say I am wearing a hat, wear के लिए PORTE word use होगा. Like je porte means I am wearing. So I am wearing a hat, matlab je porte a chapeau. Which means I am wearing a hat. Je porte un chapeau. And chemise again means shirt. Suppose if you have to say that I'm wearing a black shirt, then you can say that I am wearing, je porte a black shirt. So un chemise means a shirt black. Un chemise of a black. Black noir होता है. और अगर ये feminine word है, ये feminine word है, याद रखो. This is a feminine word. So it will become un and it will become noir with e. So je porte une chemise noire, which means I am wearing a black shirt. Okay, please copy this.
Okay, next word. Number 12 is como. Como means how. अगर किसी को पूछना है how कैसे, तो बस सीधा पूछो como. So como means how. There are other sentences also like how much, como sakut, those things we will do later. So como means how, first you remember this. Then an important word is content, जिसको इंग्लिश में कंटेंट बोलते हैं. French is content. It means happy or pleased. It is an adjective like happy or pleased. So for example, you will say that if you want to say I am happy, like I am pleased, I am happy, which means I am pleased, then you say that je suis content. Je suis content means I am happy or I am very happy. If you are a girl, then je suis content will end with an E. So I am happy, I am very happy. If you have to say I am very happy, then obviously je suis très content. It can end with E or it cannot end with E. If you are a male, then write content without E. If you are a female, then add an E. Je suis très content, which means I am very happy or I am very pleased. I am very delighted. Okay. So we have got words. Célibataire means single, chaise means chair, table is table, okay, clair is clear, chapeau is hat, chemise is shirt, like pant is pantalon, trouser is pantalon, pantalon actually pantalon, that is pant or trouser, chemise is shirt, como is how, content is happy or pleased or delighted. So you have to say I am very happy, you say je suis très content. So the next word is combien. Combien means like how much. So if you go to France, you go to a French city and you buy something or you pick up something and you say how much, kitne ka hai ye? Then just say combien. Combien means how much, and the person will answer you. Suppose sac euro. I think it ends like this. Sign chodo. Sac euro means 5 euros. Sac euro is the price. So you just have to ask combien. Combien means how much. Combien. Then the next word is like cuisine. This you already know actually. Cuisine means kitchen. So cuisine means kitchen. So a sentence can be, make 3 columns Vedika. French, English, and the sentence. So cuisine. So you have to make a sentence with cuisine. Vedika, tell me a sentence with cuisine. Any sentence using your limited vocabulary. So can you just give me 1 minute so that I can think? Suppose if you have to say that let's say there is a cat in the kitchen. Okay, see, you have to make a sentence using your vocabulary. तुमने अब तक जो वर्ड सीखा है उसको यूज करके करो. You, for example, you cannot say my mother is cooking in the kitchen because वो वर्ड तुम्हें नहीं सीखा है. So if you have to say there, हमेशा there is a के लिए इलिया होता है. तो there is a.
So, can it be like I thought I work in the kitchen ka I can make like je so what's for work? 1 second. So there is a cat in the kitchen. क्या होगा? Ilia Asha, dans, dans la, in the kitchen, dans la cuisine. Yes, sir. हाँ, तुम क्या बोल रहे हो? So I What are work you in the saying? kitchen. So हाँ, I thought je trave. So what's work ka? I forgot something tra se tha na. हाँ, that is why I'm saying कि तुम वो करो जो तुम्हें पता है अभी. वर्क वाला तो तुमको पता नहीं, I guess. No, sir, we have used the term work. I remember it's with travel. I don't remember. I just remember the spelling, not the term. हाँ, वो था वही Pronunciation है. नहीं पता. था वही है. हम्म, था वही है. वो भी हम मना करेंगे करना, बिकॉज उसमें अलग अलग कॉन्जुगेशंस होता है. लाइक आई का अलग होता है, यू का अलग होता है. समझे? यथरावाइये. तो इसलिए वो मतलब आई वुड. और वैसे भी वर्क जो travailler फ्रेंच में यूज होता है, वो ऑफिस वर्क के लिए होता है. हम लोग इंग्लिश में वर्क सभी के लिए बोल देते हैं, आई एम वर्किंग. पढ़ाई के लिए भी आई एम वर्किंग बोलते हैं. बट travailler इज बेसिकली इन फ्रेंच लाइक व्हेन यू आर डूइंग एन ऑफिस वर्क और अ बिजनेस वर्क. समझे? मतलब यू कैन नॉट से je travaille dans la cuisine. किचन वाले वर्क को travailler नहीं बोलेंगे, वो काफी ऑड हो जाएगा. ऑल राइट, यू हैव टू से लाइक सपोज तुम मील प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रिपेयरिंग मील करना होगा. प्रिपेयरिंग लाइक जब प्रिपेयर सपोज प्रिपेयरिंग के लिए प्रिपेयर का कॉन्जुगेशन होगा बहुत सारा. और फिर मील का रेपा होता है, रेपा. बट थवाई वहां पे नहीं होगा. मीन्स थवाई विल बी ऑड. ओके, सो डोंट यूज थवाई. You can say I am making हो सकता है, I am making food और I am making a dish, I am making a meal. Making के लिए जो word होता है वो होता है fair, FAIRE. Let me show you in the next word. Previous ones I will send you the recording, Vedika. We are doing a lot of words today. Suppose FAIRE, fair का बहुत सारा मतलब है, जैसे to do या फिर to make. और भी है, बट सब फॉर लेट अस फॉर द टाइमिंग स्टिक टू दिस. ये एक वर्ब है, दिस इज अ वर्ब, FAIRE. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिकॉज तुम जितना भी सेंटेंस बोल रहे हो ना, तुम हमेशा आई मेक करके बना सकते हो ये. अंडरस्टूड? सो सपोज इफ यू हैव टू से आई मेक और आई एम मेकिंग. इफ यू हैव टू से आई एम मेकिंग तो आएगा ज फे. इसका कॉन्जुगेशन आई विल टेल यू डिटेल्स में. ज के साथ पहले याद रखो फे होता है, FAIS. ज फे का मतलब है आई एम मेकिंग. नाउ इफ यू हैव टू से आई एम मेकिंग सपोज आई एम मेकिंग कॉफी, तो ज फे un काफे. लगेगा कॉफी के पहले. या फे कॉफे डाला. अब तुम लिख सकते हो इन द किचन लाइक डाला कुजिन. इज दिस क्लियर, वेदिका, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? You Yes, sir. cannot use thawaiya here because वो commercial work नहीं है. But you can use the words like cooking या फिर making. So make is a very important word which you can use in any activity. So je fais means like I am making. इसका passive composé होता है. अगर तुम्हें लिखना है I made coffee, I made something. तो in that case you need the passive composé. Okay, so passive composé का rule था that you will write je, which means a word form use करोगे. एंड इसका जो पासिव कंपोजिट वर्ड है जो सभी के साथ आएगा वो है FAIT. सो जेफे मींस आई मेड. अगर लिखना है आई मेड सपोज 2 pizzas, आई मेड 2 pizzas. तो जेफे द पिज्जाज का पिज्जाज ही होगा, बट लास्ट का एस प्रोनाउंस नहीं होगा. जफे द पिज्जा, जफे द पिज्जा, जफे द पिज्जा. Okay, please copy it till here. Combia means how much.
as in whenever you go to any shop in a French city, you just have to pick it up and say combien. Combien मतलब कितना हुआ, कितने का, how much. Just that one word you need to remember, combien. And the shopkeeper will tell you the answer, that if it is 5 euros, he will say 5 euro. 5 euro means 5 euros. 5 euro or 6 euro. Cuisine is kitchen, and faire is a new word again, to do or to make. Next is, acha, 1 second, hold a bit. Okay, copy these three words. These three words we have already done in the past. Chambre. What is the meaning of chambre? Bedroom. Okay, then next is table. Table means table, obviously. Then we have d'accord. D'accord means Okay. So it's like bedroom. This So is आपने obviously 18 के लिए क्या बोला? table. Table, right? हाँ, just the pronunciation is table. Spelling is same. Table. D'accord means, yeah, okay, fine, all right. So all right or okay, that is d'accord. So these are just one word. We use them just like d'accord. Okay, all right. Table, obviously you can again make a sentence. Chambre, we have already done these earlier, so I'm not making a sentence with them. Okay, I'm going to the next word. Okay, an important word is désolé. Important word है ये désolé. तो désolé important word है, इसको कॉपी करो और देखो क्या आ रहा है. Désolé means like sorry. Désolé means sorry. So sentence can be, so if you have to say that I am sorry, so you can just say I am sorry. Je suis désolé. Je suis désolé, which means I am sorry. Or if you are a female, then je suis désolé with an extra e at the end. The extra e will never contain an accent. Accent हमेशा second last e पे रहेगा. So this is for male and this is for female. Je suis désolé. Je suis désolé. You can obviously use the word only désolé, like जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं only sorry भी बोलते हैं sorry. You can say désolé. You don't have to always say je suis désolé. You can just say désolé. Okay, désolé. Désolé. Okay, it is like désolé. Désolé. इसको इस तरह से प्रोनाउंस करना है. So the next three words are demander. Demander means to demand or to demand or to ask, like to demand a question, basically, like that. Dine So means to ask for better, dinner. can't we just write request instead of to ask? It will be a better word. A request में एक politeness आता है जो इस word में नहीं है. It's like Okay, so it's like English का जो understood? demand होता है, that's right, it. right. Suppose a question can be like
For example, if you have to say, I would like to demand, je voudrais demander a question, une question. I would like to ask a question. If you have to say, I would like to ask a question or I would like to demand a question. So, je voudrais demander une question. Je voudrais demander une question. Dîner is dinner or to dine. Suppose if you have to say that I have my dinner or I take my dinner, say, तो तुम यहाँ पे, हम लोग कभी भी आई ईट माई डिनर नहीं लिखते, वी डोंट से je mange नहीं लिखेंगे डिनर या लंच के पहले। तो तुम लोग यहाँ पे लिखोगे आई टेक माई डिनर, विच इज टेक का प्रॉन दे वर्ड, आई होप यू रिमेम्बर, je prends, which means I take dinner, so je prends le dîner, I take the dinner. अगर तुमको लिखना है एट से रात को 8 बजे, रात को 8 बजे मीन्स 21, 8 बजे मतलब 20 आवर्स, तो एट 20 आवर्स बार 8 PM को जनरली 20 भी लिखा जाता है, 20 आवर्स। सो आई टेक द डिनर at 20 hours, which means 8 PM. So, je prends le dîner à 20 heures. Je prends le dîner à 20 heures. H is silent. H is silent. Er. Dormir. D-O-R-M-I-R, dormir, actually, dormir is to sleep. अगेन इसका कॉन्जुगेशन में हम नहीं जा रहे हैं बिकॉज उसमें बहुत सारा कॉन्जुगेट्स आएगा, आई एम जस्ट यूजिंग अ वर्ड लाइक आई वुड लाइक टू या आई लव टू, तो ये वाला पार्ट कॉन्जुगेट हो जाएगा, नेक्स्ट वर्ड कॉन्जुगेट नहीं होगा। सो जेम व्हिच मींस आई लव टू स्लीप, जेम dormi. Suppose if you have to say that I love to sleep, I love to sleep, let's say तुमको लिखना है कि I love to sleep in the afternoon, I love to sleep in the afternoon, तो j'aime dormir le आफ्टरनून होता है après-midi, après-midi मतलब आफ्टर मिड, आफ्टरनून, ठीक है, आफ्टर après होता है आफ्टरनून या आफ्टर मिड डे, तो आफ्टरनून के लिए ये वर्ड है जेम डॉर्मी, आई लव टू स्लीप इन द, इन यहाँ पे दो करके इन नहीं आएगा, ये इवनिंग या नाइट या आफ्टरनून के लिए बस ल आता है, जेम डॉर्मी ल après-midi मतलब आई लव टू स्लीप एट द या इन द आफ्टरनून. So here you are learning another word which is après-midi, so I'm just putting it here. 24 can be just après-midi, après-midi, which is afternoon. I hope you remember the other words also. जैसे soir या le soir है evening, nuit is night, N-U-I-T, and matin, M-A-T-I-N, is morning. So soir is evening, nuit is night, matin is morning, and après-midi is afternoon. Please copy till here. Okay, next is 25.
donner, donner means to give. donner, donner means to give. So if you have to make a sentence, अगेन इसको कॉन्जुगेट नहीं करना है तो आई गिव मत करना, आई गिव करने से इसका कॉन्जुगेशन सीखना होगा. तो यू ऑलवेज ट्राई टू से आई लव टू गिव या फिर आई वुड लाइक टू गिव. सेंटेंस इस तरह से बनाओ तो तुमको तब तुम एग्जैक्टली दोनों पूरा फुल वर्ड यूज कर पाओगे. जैसा अगर तुम्हें लिखना है कि आई लव टू गिव या आई वुड लाइक टू गिव, ठीक है, आई वुड लाइक टू, तो आई वुड या आई वुड लाइक टू ये हो गया जबुद्रे. आई वुड लाइक टू गिव जबुद्रे दोने. I would like to give, say, my books, may, livres, may livre. I would like to give my books to suppose some children, des enfants. या टू योर चिल्ड्रन अगर करना है तो टू योर चिल्ड्रन विल बी योर का, जैसे माई का मे होगा, योर का ते होगा. आई वुड लाइक टू गिव माई बुक्स टू योर चिल्ड्रन. सो je voudrais donner mes livres à tes enfants. यहाँ पे हो जाएगा à tes enfants. अगर फास्ट रीड करोगे तो à tes enfants. je voudrais donner mes livres à tes enfants. je voudrais donner mes livres à tes enfants. तुम लोग अभी वर्ड बाय वर्ड रीड. So the word we have discussed here is donner, which means to give. So let us recapitulate. First word is demander. Demander means to demand something, usually to demand a question. Like je voudrais demander une question. I would like to demand or ask a question. Next word is dîner. Dîner means dinner. Like I am taking, I take the dinner. I take dinner at 8 o'clock at night. So je prends le dîner avant heure. Dormir is to sleep. J'aime dormir. I love to sleep. In the afternoon, j'aime dormir le après-midi. Après-midi is afternoon. Soir is evening. Nuit is night. Matin is morning. Donner means to give, which is, for example, je voudrais donner mes livres à tes enfants. I like to, or I would like to give my books to the children. So these 25 words you will have to prepare at home, memorize the words and the meaning, and make at least one new sentence with them. Using your limited vocabulary. Like I said, do not use any form of help, internet or anything. Just using your limited vocabulary, you can still make a sentence. जब भी बोलना है कि there is a, तो इलिया लिख दो. जैसे मैंने एक वर्ड किया था कनापे, which means sofa. तुम लिख सकते हो there is a sofa in my house. So इलिया कनापे, या there is a sofa in my bedroom. So इलिया कनापे dans ma chambre, in my bedroom.